Greetings, students. How are you? I hope you all are fine. Welcome back to our channel, Nagin Best Digital Learning. What are we going to do today, children? We are going to do question and answers of the Ghat of the Only World by Amitav Ghosh. Okay, and here is the writer. He had written what? He had written about Shahid Ali, okay, who was his friend. Okay. Students, let us first see the summary of the Ghat of the Only World. The story is written beautifully by Amitav Ghosh and revolves around Kashmiri poet Shahid Ali. He was very talented, and after diagnosing brain tumor, he knows that he had a very little time left. He gave a very beautiful experience of how to celebrate each and every moment of life. Though their friendship was short lived, Shahid revealed many political problems of Kashmir and left very beautiful images also to his paradise. He believed that religion and politics should never be mingled. He also points out all the negativity around that has taken away the charm of his paradise. He had a wish to make a Hindu temple in his room, and he spoke about this wish to his parents also. His mother, with time, brought idols and a small room of and the small room of Shahid has become a holy temple. There was a proper space for both Islam and Hinduism. Shahid had a craving for food and cuisines and enjoyed it till his last stage of cancer. He presents himself everywhere and at every party. He took cancer as a joke and never took it seriously. He never yielded to cancer. Even at the last stage of his cancer, he was showing a display of laughter, enjoying food and poetry. He was showing that he was defeating the disease with all these, but but he has near to his death. He was unable to see his words move the author. The author, in turn, kept his promise made to him. He wrote about his painful and sweet memories with his writing skill. The Ghat of the Only World was an attempt to give life to Shahid's memories. Okay. Now, children, let us do question and answers. Okay, children, let us do question and answers. Now, the question is from the at the end of the chapter. What impression of Shahid do you gather from the piece? Shahid introduction. Shahid came to be friend with the writer Amitav during his last days of life. ठीक है Shahid was basically an Indian, like the author. As the very name suggests, he was a Muslim. He belonged to Kashmir. He sought his education in Delhi. While in India, they shared common friends and nothing more. But as Shahid shifted to Brooklyn in 2000, he came to entrust a very important task to the राइटर. उसने बोला था जब मैं मरूंगा तो मेरे बारे में लिखना था. दैट वॉज एन इम्पॉर्टेंट टास्क. An endless revealer, Shahid had great love and fun for festivity. The smell of food would make him cry. क्या बढ़िया खाना है. He was fond of exactitude in the cooking of food. He himself would host parties almost daily. He would do long preparation and cooking to host and such parties. He always liked to hold addas. Addas were places where हम बोलते हैं ना let's go to adda, where is a French friends का जो place होता है, right, where you feel that you go to chill, and surrounded with friends and relatives. Food, fun, friends and poetry all were his weakness. Aware of impending death, Shahid suffered from brain tumor. The fact came to be established a year or so before his death. Before that, he had been under treatment for cancer. He had sensed his death, but he did not want to cry to death. He wanted to sip up the last drop of joy of life with great relish and enjoyment. He described about his approaching death, okay, in many of his works, but he was quite cool and at ease and peace with death, and he had consoled himself that he was going to reunite with his departed mother.
in the other life, after the earthly life. His friendship with Amitav. After shifting it to Brooklyn, Shahid started meeting and eating with Amitav almost every day. He entrusted him to write about him after he was gone. He didn't want that he should be remembered just through the words or memory, but he wanted to be remembered through some writing about him. This Amitav did successful later on, keeping his friendship friendly pledge. A peaceful end. Shahid, it seems, was due to the stormy and violent political atmosphere in Kashmir. And this is, children, this is torn. 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 ठीक है. During his last days, he would talk about Kashmir a lot. He actually wanted to die there, to lie peacefully beside his mother's grave. But due to logistic reasons, he had to change his idea. Still there is Northampton in the vicinity of Amherst, the sacred place of his beloved Emily Dickinson. He felt he would rest peaceful. So on December 8 at 2 a.m., he died a quiet, serene, and peaceful death while in deep sleep. Conclusion. To conclude, we all can say that apart from being a great poet, Shahid was an incarnation of joy, optimistic love, and wisdom. How do Shahid and the writer react to the knowledge that Shahid is going to die? Shahid had gone to for CT scan test. He had scheduled for 2:30 in the afternoon. The writer got restless and he started calling at his home. He phoned many a times in the afternoon, in the evening, to have the latest information about the position of the alignment of his dear friend. Nobody responded, but he couldn't be hindered and he phoned in the early next morning. This time Shahid responded, ठीक है, without any preambles. ही स्ट्रेट फॉर्म, मतलब वे बोलते हैं ना preambles कि हे हाउ आर यू, नहीं, वो जो इंट्रोडक्टरी बोलते हैं कि हाउ आर यू, उसने कोई भी इंट्रोडक्टरी नहीं करवाई. Children, right? And he straight forward started giving the bad news of his ailment, um, which had already taken a devastating form. He told that the doctors had stopped his all the medicines and treatments like chemotherapy. They just would give him a radiation a little later, but they did not hope much from that also. As this writer is dazed and and lost the sense of uttering some words of consolation, he could merely ask, "What would you do now, Shahid?" At this, Shahid, in the quiet, untroubled, matter of fact manner, told that first he would arrange his passport, set his will, and then leave for Kashmir to die there. He didn't want to trouble his children there. Moreover, sorry, not his children, his siblings. Here we will have siblings, okay? Moreover, he wanted to some have some moral support from his father, who was still in Srinagar. He wanted to lie in peace in his grave beside his mother's grave there, right? So we see that Shahid were quite a bold upfront, as he was all prepared to welcome his impending death. He just wanted to complete his all the due responsibility so that his siblings, children, this is not, this is siblings, have no problems after he's gone. Whereas the writer is too shocked and stunned to react properly according to this occasion. Look up the dictionary for the meaning of word diaspora, right? Okay. What do you understand to the Indian diaspora from the piece? Diaspora simply means dispersion or a scattering as per the dictionary. The present extract, the Ghat of the only word, dabs a very morbid line of Indian diaspora. First of all, the writer talks about Indian citizens living in different parts of the world like America, England, and so on. Their lifestyle go with them to foreign lands, like Shahid went to settle in Brooklyn. But his love for Rogan Ghosh he never ceased. He won't. He won't
through parties where Indian dishes well cooked and delicately served were the main attractions. There were food. Sorry, he was fond of Kishore Kumar, his love for poetry, and that too, Kashmir had almost become a universal topic, being his declining days. Secondly, I feel perhaps that the writer felt somewhat scattered and greatly affected due to the violent political atmosphere in the beloved state Kashmir. He wanted that politics and religion must be kept secret. He expressed his desire to die in Kashmir. It proves that, in spite of all the worldly luxuries, his soul craved to touch his homeland. So, it is an emotional diaspora on the part of Shahid, which I feel every Indian settled in foreign land must be suffering from. Finally, his own resident in New York, presented various tastes for various continents. Now, the Ghat, the only word extra question and answers, right? We will be doing very short question answers from the chapter. Okay. What characteristics of शाहिद strikes you the most? मतलब इसका मतलब ये है चिल्ड्रन, तो शाहिद का जो कैरेक्टरिस्टिक था वो हमको कैसे अवेकनिंग करता है, हमें सबसे पसंद क्या है? शाहिद इज क्वाइट लूसिड फेलो. ठीक है. ही इज एन एंडलेस स्कॉलर. ही हैज़ द सॉसरस एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म कॉमन प्लेस थिंग्स इनटू मैजिकल, जो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है, विच हैज़ बीन बोरिंग फॉर अदर पीपल. जब वो उस प्लेस की बात करता है या जब वो वहाँ पर बात करता है, तो वो जो वहाँ पर जो इंटायर जो नॉन इंटरेस्टिंग होता है ना चीज़ें, वो इंटरेस्टिंग बना देता है. तभी उसको क्या बोला है? सॉसरस बोला गया है. ठीक है. विच ब्रिंग्स इन थिंग्स इन टू मैजिकल, राइट. हिज लाइवलीनेस स्ट्राइक्स मी द मोस्ट, मतलब जो उसकी जिंदा दिल ही बोलते हैं, राइट. It strikes us the most. कैसे? When he faces his what do you call it, disease. Even when children, when he faced his disease also, वो बहुत जिंदा दिली था. वो उनके बारे में गुस्सा नहीं था, एंग्विश नहीं था, गुस्सा नहीं आ रहा था उन्हें किसी बात का. बट ही वॉज वेरी हैप्पी, राइट. वेन एंड वेयर डिड द राइटर befriend शाहिद? कहाँ पर मिले थे वो? द राइटर befriend शाहिद when the latter came to stay and settle in Brooklyn. और उनकी दोस्ती कब हुई? जब वो ब्रुकलिन आए थे. ओके चिल्ड्रन, कब हुई थी? जब वो ब्रुकलिन आए थे. उससे पहले वो यूनिवर्सिटी में थे, राइट. और उनके उनके कॉमन फ्रेंड्स भी थे, बट तब तक उन्होंने कोई बात नहीं करी थी. बट उन्होंने बात तब करी थी जब वो कहाँ आए थे चिल्ड्रन? जब वो ब्रुकलिन आए थे. वट वर द बेसिस ऑफ द फ्रेंडशिप प्रोग्रेसिंग सो फास्ट? अब उनकी बेसिस का क्या था कि उनकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छे से हो रही थी. ठीक है. नाउ शाहिद एंड अमिताभ वर फेमिलियर विद ईच अदर सिंस दे कॉलेज डेज. मतलब वो एक दूसरे को जानते तो थे कॉलेज डेज से, बट इतने अच्छे दोस्त नहीं थे. When Shahid came to stay in a building a few blocks away from the writers इन ब्रुकलिन, बोथ बिकेम क्लोजर. अब कौन? जब शाहिद आया तो वो कहाँ रहता था? 8 blocks अवे रहता था. किससे? अमिताभ घोष से. सो व्हेन ही केम क्लोजर चिल्ड्रन, लिविंग नियर अमिताभ घोष, दे बिकेम मोर फ्रेंडली. ठीक है. वो जानते तो थे कॉलेज टाइम पे. सून दे स्टार्टेड मीटिंग ऑन लंच. और कहाँ मिलने लगे? वो लंच पे मिलने लगे. दे फ्रेंडशिप प्रोग्रेस फास्ट. और उनकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रही थी. एज दे बोथ हैड सिमिलर टेस्ट इन फूड, म्यूजिक एंड फिल्म्स. और उनका टेस्ट, जब वो एक दूसरे को जानने लगे थे चिल्ड्रन, तो उनका क्या है? टेस्ट भी सिमिलर हो गया था. जैसे कि उन्हें क्या करना अच्छा लगने लग गया था? फूड, म्यूजिक एंड फिल्म्स, राइट. What responsibility did Shahid hand over to the writers and why? What responsibility? शाहिद ने क्या responsibility दी थी? किसको? अमिताभ घोष को. Shahid hand over responsibility to the writer to write something about the former after his death. तो शायद ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि जब मैं मरूंगा, ठीक है, व्हेन आई डाई,
प्लीज राइट समथिंग अबाउट मी। वो चाहता था कि अमिताभ घोष उनके बारे में लिखे, और विच वॉज ऑल्सो फुलफिल्ड, है ना, थ्रू दिस स्टोरी वी आर रीडिंग। ही डिड सो एंड ही वॉन्टेड टू बी रिमेंबर्ड नॉट थ्रू द स्पोकन रिसाइटेटिव्स ऑफ मेमोरी एंड फ्रेंडशिप बट थ्रू द रिटन वर्ड्स। तो वो कैसे याद रखना चाहते थे कि लोग उनके बारे में नहीं बोलते अरे वो तो मर गया है, बहुत अच्छा इंसान, ऐसा कुछ नहीं। ही वॉन्टेड टू बी रिमेंबर्ड थ्रू द रिटन वर्ड्स, लोग उनके बारे में पढ़े और उनको फिर याद करें, राइट। हाउ डिड द राइटर कीप हिज प्रॉमिस मेड टू शाहिद, और राइटर ने अपनी जो प्रॉमिस था कैसे फुलफिल किया। हाउ डिड ही फील बिफोर टेकिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, और हाउ डिड ही फील बिफोर टेकिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। द राइटर केप्ट हिज वर्ड क्वाइट ऑनेस्टली, तो उन्होंने पूरे सच्चाई के साथ ये वर्ड्स रखे हैं। जस्ट आफ्टर प्रॉमिसिंग शाहिद, he picked up his pen and started jotting down the details of the conversation with the former quite sincerely and regularly। और जब भी उन उन दोनों की बात होती थी, जब भी सबसे पहली बार जब उन्होंने बोला था कि प्लीज़ राइट अबाउट मी आफ्टर आई डाई, राइट, तो उसके बाद अमिताभ घोष क्या करने लगे, उनके बारे में जो भी उनकी टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन होती थी वो लिखने लगे। लेटर ही रोट अबाउट शाहिद एज पर प्रॉमिस, तो हम जब चैप्टर पढ़ रहे हैं दिस इज अ प्रॉमिस, ठीक है। अर्लियर ही फेल्ट दैट सम अदर राइटर फ्रेंड ऑफ शाहिद कुड डू द जॉब बेटर, हु न्यू हिम बेटर क्लोज एंड लॉन्गर, और उनको पहले ऐसे लगता था कि शाहिद के कोई जो फ्रेंड है जो उनसे क्लोज है वो ये अच्छे से लिख पाएंगे। बट क्या है, शाहिद वॉन्ट हिम टू राइट अबाउट हिम, राइट, अमिताभ घोष रिक्वेस्टेड हिम, ठीक है। वाई डिड शाहिद वॉन्ट टू रिटर्न टू कश्मीर, शाहिद क्यों चाहता था कि वो कश्मीर रिटर्न हो, ठीक है। शाहिद वॉन्टेड टू रिटर्न टू कश्मीर टू डाई, ठीक है, वो चाहते थे कि लास्ट बार मैं कहाँ जाऊँ, जहाँ मैं पैदा हुआ था वहीं मैं मरने जाऊँ, राइट। ही वॉन्टेड टू लाई फॉर इटर्नल रेस्ट बिसाइड हिज मदर्स ग्रेव, और वो क्या चाहते थे कि इटर्नल हिज मदर ग्रेव के पास वो लेटना चाहते थे, राइट। बिसाइड ही डिडंट वांट हिज सिबलिंग्स टू मेक जर्नी आफ्टरवर्ड्स फॉर हिज फाइनल सेरेमनीज, और प्लस वो चाहते थे कि जो उसके जो सिबलिंग्स थे, ठीक है, उनको कोई परेशानी ना हो, ठीक है, कि वो वहाँ पर जाए। Finally, he wanted to spend some time and have some moral support while लिविंग विद हिज फादर ड्यूरिंग हिज फाइनल टाइम्स। अब वो क्या चाहते थे कि जब फाइनल टाइम में भी, जब वो मरने से पहले क्या हुए, उनको ये सपोर्ट मिलता रहे, क्या सपोर्ट मिलता रहे, उनके फादर से सपोर्ट मिलता रहा ये फाइनल टाइम पे। व्हाट वाज द सोल कंसोलेशन टू शाहिद ड्यूरिंग हिज फाइनल डेज ऑफ लाइफ। Though Shahid knew it quite well that his death was approaching fast to grab him by neck, yet he was not afraid। उनको पता चल गया था कि क्या है, मैं मरने वाला हूँ, ठीक है, और मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा। बट फिर भी चिल्ड्रन, फिर भी उन्होंने क्या रखा, ही वॉज नॉट अफ्रेड, कि वो मरने से कभी डरे ही नहीं। द सोल कंसोलेशन ड्यूरिंग दोज डेज वॉज दैट ही वुड reunite with his mother after his death in the another world if there is any। वो बोलते भी हैं राइटर को कि मैं क्या हूँ, मैं इसलिए खुश हूँ कि मैं मर रहा हूँ कि आफ्टर लाइफ, अगर आफ्टर लाइफ होती भी है तो मेरी चीज़ें क्या होगी, सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आई विड रीयूनाइट विद हिज मदर, आई विड रीयूनाइट विद माई मदर, इसीलिए वो मरना भी खुशी खुशी चाहते थे क्योंकि वो अपनी मदर से रीयूनाइट हो जाएंगे। हाउ डिड द राइटर फील अबाउट शाहिद्स डेथ, ठीक है। द फ्रेंडशिप ऑफ द राइटर एंड शाहिद वॉज क्वाइट न्यू, ठीक है, दो दे टॉक्ड अ लॉट and shared many common tastes, so their friendship, in spite of a short life, had become quite firm, ठीक है। Though they talked a lot and shared many common tastes, ठीक है, so their friendship in spite of short life has become quite firm। और in spite की उनकी जो क्या बोलते हैं दोस्ती थी बहुत कम समय के लिए थी, बट बहुत फर्म हो चुकी थी, बहुत स्ट्रांग हो चुकी थी। आफ्टर शाहिद्स डेथ द राइटर फेल्ट एज इफ a void
अवॉइड मीन्स एन एम्प्टीनेस हैज़ अकर्ड, और जैसे ही वो मरे तो राइटर को ये, अमिताभ घोष को ये लगने लग गया कि एक क्या है, उनके अंदर खालीपन है, उनकी दोस्ती के, उनकी लाइफ में कुछ खालीपन है, राइट। The writer still felt Shahid's presence even after his death in his own living room. और राइटर ये भी बोलता है कि जैसे क्या होता है, उनकी प्रेजेंस उनको मिली, ठीक है, आफ्टर शाहिद्स डेथ, ठीक है। हाउ डिड शाहिद बिहेव इन द हॉस्पिटल ऑन May 21, और May 21 में शाहिद ने कैसे बिहेव करा। शाहिद हैड ऑन May 21 शाहिद हैड गॉन टू द हॉस्पिटल टू अंडरगो अ सर्जिकल प्रोसीजर, और 21 में शाहिद ने क्या करा, ही हैड गॉन एंड what had he done, he had gone and under surgical procedure, वो एक सर्जिकल प्रोसीजर के अंडर गए, ठीक है। इट एम्स एट रिलीविंग द प्रेशर ऑन हिज ब्रेन, और वो क्यों गए थे, ताकि क्योंकि मेडिसिन से तो वो ठीक हो नहीं रही थे, ठीक है, तो वो क्या चाह रहे थे कि वो जो प्रेशर है जो उनके ब्रेन का, डॉक्टर ये चाह रहे थे वो रिलीव हो, जो स्ट्रेस था वो कम कम होता जाए, राइट। तो तभी भी उनके जो वो था हेयर वो शेव कर दिया गया था, और जो ट्यूमर था चिल्ड्रन वो कुड बी सीन फ्रॉम हिज स्कैल्प। व्हेन ही वॉज लीविंग वार्ड अ व्हील चेयर वॉज बॉट, और जब वो वार्ड छोड़ रहे थे तब एक वार्ड बॉय क्या लेके आया, एक व्हील चेयर लेके आया, बट ही रिफ्यूज टू सिट ऑन इट टेलिंग दैट ही कुड स्टिल वॉक। और वो बोला कि मैं इतना कमज़ोर, बोलता है कि मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ कि मैं क्या, ही रिफ्यूज्ड, ठीक है, वो बोलता है मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ कि मैं क्या करूँगा, कि मैं यहाँ पर नहीं बैठूँगा, बट ही रिफ्यूज टू सिट ऑन टेलिंग दैट ही विल स्टिल वॉक, वो बोल रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ एंड आई विल स्टिल वॉक, बट हिज नीज बेंट सून आफ्टर ही हैड टू एक्सेप्ट द व्हील चेयर दिस टाइम। अब उनके नी बेंट होने लग गए, उनको वीकनेस आने लग गई, और सिवाय कि वो व्हील चेयर का उनके पास कोई चारा नहीं था, सो ही स्टार्टेड टू सिट ऑन दी व्हील चेयर दिस टाइम। शाहिद्स गैरगेरियस हैड नो लिमिट एक्सप्लेन। शाहिद रियली लव टू बी सराउंडेड विद फ्रेंड्स, और शाहिद को क्या, फ्रेंड्स बहुत पसंद थे, रिलेटिव्स बहुत पसंद थे, पोएट्स, राइटर्स, ऑल ऑल द टाइम। तो वो चाहता था कि मैं सब अपने फ्रेंडशिप के साथ रहूँ, फ्रेंड्स के साथ रहूँ, क्या बोलते हैं, रिलेटिव्स के साथ रहूँ, पोएट्स के साथ रहूँ, राइटर्स के साथ रहूँ, और पूरे के पूरे टाइम वो क्या करते थे, उन्हीं के साथ रहना चाहते थे। इट प्रूफ हिज गैरिगोरियसनेस that there was never ending, there was never an evening where there was never wasn't a party in the living room, और ऐसा कोई भी दिन नहीं था, ऐसा भी कोई टाइम नहीं था जहाँ उनके घर पे पार्टी नहीं होती रहती थी, उनके घर पे पार्टी रोज़ होती थी, और बहुत सारे लोग उनको मिलने आते थे, राइट, और हाफ, मोर देन हाफ द डजन, they came to meet him, right. He had once told the writer, I love it that people come there, people come and there is always food, और उनको, वो राइटर को बताते भी हैं, क्या बताते हैं, कि मुझे पसंद है कि लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और क्या करते हैं, यहाँ पर खाना खाते हैं, पार्टी करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि लोग मुझसे मिलने आते हैं। ना देर इज़ ओनली 2 लॉन्ग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। कमेंट ऑन द फ्रेंडशिप बिटवीन द राइटर एंड द शाहिद। यहाँ पर राइटर कौन है, अमिताभ घोष, तो यू नीड टू कमेंट। शाहिद एंड द राइटर बोथ वर बेसिकली इंडियन सेटल्ड इन इंग्लैंड, और दोनों के दोनों, अमिताभ घोष और राइटर क्या थे, देवर इंडियंस, ओके, हु सेटल्ड इन इंग्लैंड, ठीक है। दे बोथ हैव स्टडीड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, और कहाँ पढ़े थे वो दोनों के दोनों, दिल्ली यूनिवर्सिटी। द कॉमन पीरियड एट यूनिवर्सिटी वॉज वेरी शॉर्ट, और वो जो एक दूसरे को जानते थे वॉज वेरी शॉर्ट इन वेयर इन यूनिवर्सिटी, ठीक है। हेंस दे डिडंट ग्रो एनी फ्रेंडशिप, और वहाँ पर एक दूसरे को सिर्फ कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू जानते थे, तो उनके कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे। बट दे बोथ हैड कॉमन फ्रेंड्स, और उन दोनों के कॉमन फ्रेंड्स थे, राइट। दे रिमेन्ड एट अक्वेंटेंस वाइल इन इंडिया, तो जब वो इंडिया में थे वो एक अक्वेंटेंस की तरह, एक जानकार, कि हाँ मैं इनको जानता हूँ, ये मेरे फ्रेंड के फ्रेंड, ऐसे रहते थे, राइट। शाहिद्स वर्क द कंट्री विदाउट अ पोस्टमैन इम्प्रेस द राइटर वेरी मच, और उनको क्या इम्प्रेस करा, शाहिद अमिताभ घोष को, जब उन्होंने क्या पढ़ा, उन्होंने बुक पढ़ी उनकी
पोम पढ़ी, द कंट्री विदाउट अ पोस्टमैन, राइट, और उनको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया. दे हैड बिकम फोन फ्रेंड्स एज वेल, और अब वो क्या बन चुके थे, अपने फोन फ्रेंड्स बन चुके थे. बट एज शाहिद शिफ्टेड टू ब्रुकलिन वेयर द राइटर वॉज ऑलरेडी सेटल्ड, द वार्म ऑफ द फ्रेंडशिप इंक्रीज. और जब जो शाहिद है वो कहाँ, ब्रुकलिन में आए, और उनके 8 ब्लॉक्स के बाद उनका घर था, तो उनकी फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो गई. दे शेयर्ड सेम नेबरहुड, सो दे स्टार्टेड मीटिंग ऑन मील्स. तो वो एक ही नेबरहुड को बिलोंग करते थे, तो वो क्या करने लगे, दे स्टार्टेड मीटिंग ऑन मील्स. दे फाउंड द टेस्ट इन रोगन जोश, किशोर कुमार एंड बॉम्बे फिल्म्स. ठीक है, और उनको क्या खाना पसंद था, रोगन जोश, और वो गाने किसके सुनते थे, किशोर कुमार के, एंड बॉम्बे फिल्म सेम. सो दे बिकेम नाउ बॉसम न्यू फ्रेंड्स. नाउ बॉसम फ्रेंड्स. अब उनकी फ्रेंडशिप जागने लग गई. द राइटर फाउंड एन ऑलवेज जॉली एंड लूसिड दो ही वॉज अंडर ट्रीटमेंट. ठीक है, उसके बाद भी वो अंडर ट्रीटमेंट थे, बट वो क्या थे, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी देखते थे उन्हें. फॉर द लास्ट 14 मंथ ही हैड टॉक्ड अबाउट हिज डेथ. ठीक है, और 14 मंथ जब स्टार्टिंग में था, 14 महीने उन्होंने अपनी डेथ के बारे में कुछ बात नहीं कर दी थी. बस एज डॉक्टर्स टोल्ड दैट इवन रेडिएशन वोंट हेल्प, ही होप for life but not for joy and happiness. He behaved quite sensible even during the last days of his life. He asked the writer to write something about the former after his death. Except this, he never troubled anybody in his life. He enjoyed the last drop of the drink of life. He never complained. Finally, he died a peaceful death just in sleep. It left a void, emptiness. उसका मतलब है life of writer. He felt that Shahid's presence in the living room even after his death. Their friendship had become so fast, right? Justify the title, The Ghat of the Only World. The Ghat is a Hindi word which simply means shore. Shahid, the protagonist of the excerpt, was standing at the Ghat of the Only World on the verge of death. He was being consumed by brain tumor already, and he was undergoing surgical procedures, operations, and medications. But nothing was helping him. Finally, doctors stopped all treatments and recommended radiations through the chances of his survivals were quite bleak, means less. They had given him a year's time. After this, Shahid felt as if he was standing on the last end of his life, after which his journey to another life would start. Moreover, the terrace on the top of the Shahid's residence was very significant view of Manhattan skyline across the East River. He lived the scene of Brooklyn, water from slipping like a ghat into the East River. He made his last days lovely by seeing and enjoying beautiful things, right? He once had said that he had no limit to be sad and depressed. So he found joy, love, friendship, and poetry wherever and in everyone. Thank you, children. Thank you so much. Please like, share, and comment on the video. Thank you, children.